की, लोगों की। याद रखें, ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं, चुने हुए लोग हैं जिन्हें पार्लियामेंट भेजा गया। এত রাতে কার সাথে কথা বলবো? কাউকে তো বিরক্ত করতে ইচ্ছা করছে। याद रखिए, ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं, चुने हुए लोग हैं जिन्हें पार्लियामेंट भेजा गया है। Who do you care about more, the American people or Israel? The American people or Israel, sir? Who do you care about more, the American people or Israel? People or Israel? American people or Israel, sir? Who do you care about more, the American people or Israel? No answer? चलिए, ये बात तो साफ हो गई कि महा इजराइल भक्ति चल रही है अमेरिका में। अपने लोगों की भक्ति उतनी नहीं हो रही है जितना इजराइल के लोगों की हो रही है। लेकिन सवाल आता है, ऐसा कैसे हो गया अमेरिकन पॉलिटिक्स में, जो कि एक एडवांस डेवलप्ड डेमोक्रेसी जानी जाती है, बोली जाती है। বন্ধুরা, একটা কথা বলে নেওয়া উচিত। আসলে বর্তমান ইরান ইসরায়েল ওয়ারে মুসলিম বিশ্ব কোনো কথা বলতেছে না এই জন্য, কারণ ওনারা হচ্ছে শিয়া আর হচ্ছে সুন্নি। আর সুন্নি যতটুকু যে কটা কান্ট্রি আছে সবগুলোর যা শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ আছে তারা সবাই হচ্ছে কাপুরুষ। হ্যাঁ, সেই কাপুরুষ মধ্যে কী বলে সিংহ হচ্ছে একমাত্র ইরান। এই জন্যই নেতানিয়াহু এটার নাম দিয়েছিল রাইজিং লায়ন। হ্যাঁ, তো একটা বনে দুইটা সিংহ থাকতে পারে না, যেরকম ইরান এক সিংহ, ইসরায়েল আর এক সিংহ, তো দুই সিংহ থাকতে পারে না। আর দুজনেই ইসলামের বড় শত্রু। ইরানও আপনার হলো ইসলামের শত্রু আমি মনে করি, কারণ ওনারা হচ্ছে শিয়া। ওনাদের মধ্যে অনেক ভাগ আছে, প্রভাব আছে, এগুলো নিয়ে পরে কথা বলি। এখন দেশভক্তের আমাদের যে আকাশ ব্যানার্জি, উনি কিছু কথা বলতেছেন, এটা শুনি। হ্যাঁ, এটা নিয়ে আলোচনা করি। তবে আমার মনে হয় না এই যুদ্ধটা বেশি দিন টিকবে। যেমন শুধু যেভাবে যে বিশ্বের যে শীর্ষ নেতাগুলো আছে তারা যেভাবে এটা মধ্যস্থতা করার জন্য মানে আগাইতেছেন। ঠিক আছে, ওকে, আমি শুনি। देख रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं, लेकिन सैकड़ों ऐसे लीडर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, ऑफिशियल्स खुले आंख बंद करके, मुट्ठी खोल करके इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि अपने देश के सोल्जर, अपनी इकोनॉमी, अपने हेल्थ केयर, अपने रिसोर्सेस को ताक पे रख के, दांव पर लगाकर ये बोल रहे हैं कि इजराइल को एक खरोच, 7 समुद्र पार बैठे इजरायली को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्या जादू किया है इजराइल ने अमेरिका और अमेरिकन पॉलिटिशियंस पर? और बता दूं कि ये जादू आज से नहीं, बल्कि पिछले 70 सालों से चला आ रहा है, कल्टीवेट किया जा रहा है। पहले तब भी थोड़ा सा ये जादू कम हुआ करता था, लेकिन बीते 20-30 सालों में तो मानो अमेरिकन कांग्रेस में लोग अमेरिकन के लिए कम और इजरायलीज के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। वेल, ऑब्वियसली एक स्ट्रेटेजिक कारण है सालों से, और ये शुरुआत है कि अमेरिका सस्ते तेल की वजह से मिडिल ईस्ट में लड़ाई करवाता आया है, रजीम चेंज करवाता आया है, जिसके वजह से ऑलमोस्ट सारे ही मिडिल ईस्ट के देशों में अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों के वजह से, खतरे के वजह से अमेरिका ने अटैक किया है, रजीम चेंज किया है, जिससे अमेरिका से भी काफी लोग वहां नफरत करते हैं। ऐसे में उन्हें बस एक सहारा मिला तब इजराइल का, जो अमेरिका की तरह ही एक कोट अनकोट प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी था, जो फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स समझता था, फ्री विल, फ्री इकोनॉमी की बातें जानता था और उसे प्रमोट करना चाहता था। साथ ही साथ एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी लाता था, जो इस एरिया में काफी कम मिलता था अमेरिका को। तो ऐसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजनल एलाई को, लाइक माइंडेड पार्टनर को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे ये पार्टनरशिप वही हुआ, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया। यूएस पार्टनरशिप मिलते ही इजराइल ने धीरे धीरे अमेरिका के अंदर अपनी इंफ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। लोअर लेवल काउंसिल इलेक्शन से धीरे धीरे लेकर कांग्रेशनल, सेनेट, यहां तक कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने लगा इनके पैसे। हैवी इलेक्टोरल फंडिंग आने लगा। आज के दिन में अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमिटी यानी एपैक जैसे लॉबिंग ग्रुप्स का अमेरिका में बहुत जबरदस्त तरीके से, যারা দেখতেছেন তারা জানান যে এই যুদ্ধ কতদিন স্থায়ী হতে পারে। আমার মতে হচ্ছে সর্বোচ্চ গেলে 1 মাস 2 মাস হতে পারে, আমার প্রেডিকশন বলে। যদিও আমি যতটুকু চিন্তা করি ততটুকু না হতে পারে, আর বেশি হতে পারে। তো আপনারা কমেন্টে জানান যে আসলে যুদ্ধটা কতদিন টিকবে। হ্যাঁ, আর আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা এটা একটু কমেন্ট করলে ভালো হতো। ওকে, নাও লিসেন।
होल्ड है। एपैक जैसे ग्रुप्स के थ्रू इजराइल हर साल अमेरिकन इलेक्शंस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट करता है टेड क्रूज और टॉम कॉटन जैसे सेनेटर्स माने अपने पालतू को इलेक्ट करवाने के लिए। Mossad effectively has determined U.S. policy for decades, and Trump is falling into line. We know that our foreign policy is governed by deep state apparatus, the CIA, Mossad, MI6. अपने आप को कहलाने वाला, डेमोक्रेटिक लाइट दिखलाने वाला अमेरिका में इलेक्शंस कितनी गंदी तरीके से होती हैं और फंडिंग के कितने गंदे सोर्सेज होते हैं, इस बात का अंदाजा भी लगाना काफी मुश्किल है। और अंत में होता यह है कि फंडिंग जो करता है उसके लिए ये पॉलिटिशियंस काम करते हैं। फंडिंग तो सिर्फ एक पार्ट है, ये अमेरिका को इजराइल का जो कंट्रोल है वो सिर्फ एक पार्ट है। भूलिएगा मत, आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चेज, ब्लैक रॉक, इलियट, डीई शॉ, पेपैल जैसे कई टॉप अमेरिकन फर्म्स हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जूइश कंट्रोल से होते हैं। ये कंपनी अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बिग मनी कंट्रोल करती है और एक जूइश कनेक्शन होने के वजह से सालों से इन कंपनीज पर प्रो इजराइल लॉबिंग की फंडिंग करने के एलिगेशंस लगते आए हैं, लेकिन इन कंपनीज को कोई छू नहीं पाया है। इनका होल्ड इतना स्ट्रांग है पूरे सिस्टम पर। एंड इन द एंड ये सब जो पैसा आ रहा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सपोर्ट और जो दूसरे को दबाया जा रहा है, याद रखिए फंडिंग तो एक होता है, दूसरे को डिस्क्रेडिट करना, दूसरे के कैंपेन को हराना, ये एक और जो खतरनाक गेम है अमेरिका में खेला जाता है। तो इतना पैसा लगाने के बाद मिलता क्या है? ये जो लॉबिंग है ना, ये सिर्फ एक व्हाइट वॉश टर्म है सिस्टमैटिक करप्शन के लिए। भाई जैसे इलेक्शन में पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो, जैसा हमने यहां देखा है, उसी तरीके से ये यहां ये सिस्टम्स होती हैं। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, इलेक्टोरल फंडिंग होती है। बिग मनी के अलावा याद रखिए सालों से कंस्पिरेसी थियरिस्ट ने ये भी बोल के रखा है कि अमेरिका किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है बाय इजरायली इंटरेस्ट इंक्लूडिंग मोसाद। अब कंस्पिरेसी थियरीज हम देशभक्त पर जनरली बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से अमेरिका इजराइल के तलवे चाट रहा है, उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कंस्पिरेसी थियरीज माननी पड़ेंगी कि कैसे यूएस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट उनके ऊपर डर्ट इकट्ठा करना भी मोसाड का काम होता है। इसमें आइडेंटिफाइड लीडर्स के सारे काले करतूतों की जांच करता है इजराइल, काले चिट्ठे अपने पास लाता है, बैक चैनल से फिर ब्लैकमेलिंग भी शुरू करता है। इस ब्लैकमेल रिंग में सबसे बड़ा अभी रीसेंट नाम जो आया है वो है जेफरी एप्स्टीन। कंस्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि एप्स्टीन खुद ही एक मोसाद स्पाई या कम से कम मोसाद के लिए काम कर रहा था।
पक्का ट्रम्प अंकल के लिए। ओनली प्रॉब्लम ट्रम्प के जो असली पॉपो हैं इजराइल, वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं होंगे, वो इसे जोक मानेंगे और बहुत ही भद्दा मजाक मानेंगे। ट्रम्प पहले ही याद रखिए एक बार बाल बाल बच गए थे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट से, अगली बार शायद ना बच पाए। और मान कि अगले 2 हफ्तों में ये जो इजराइल की लॉबी है ये ट्रम्प को फोर्स करती है कि ईरान पर आप बम गिरा दें, कुछ बड़ा हरकत कर दें, तब भी अमेरिका में एक और नई प्रॉब्लम अब आ गई है। इतने बार केमिकल न्यूक्लियर ये जो अटैक होने वाला है, हम खतरे में हैं, ये फॉर्मूला इतना पुराना हो चुका है कि अब अमेरिकन लोग भी अब ऊब चुके हैं, पूछ रहे हैं कि भाई इजराइल के लिए हम क्यों मरे। जब उन्हें पता चल गया है कि इजराइल को कितना टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, तो उनके दिमाग के सर्किट उड़ रहे हैं। अमेरिका में हेल्थ केयर को लेकर इतना ज्यादा क्राइसिस है, इकोनॉमी को लेकर इतना क्राइसिस है, इन्फ्लेशन को लेकर इतना क्राइसिस है। यूएस एड अमेरिका ने बंद कर दिया पैसे बचाने के लिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई कि वो ईरान बने, वो जो इजराइल एड है उसको कब बंद करोगे। एक और सिग्निफिकेंट चीज हो रही है अमेरिका में, मेन स्ट्रीम मीडिया को तो एपैक खरीद सकती है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर लोगों का विश्वास बना है, इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स पर जो विश्वास बना है और वहां जो कमेंट्री हो रही है, उससे एपैक का जो खेल है, ये इजरायली लॉबी का जो खेल है ना, वो दुनिया के सामने अब आ चुकी है, अमेरिकन के सामने आ चुकी है। मेन स्ट्रीम मीडिया अब कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है अमेरिका में। अमेरिका इजराइल को कितना बिका हुआ है अब ये सबको दिख रहा है। भाई होना ये था कि মানে কোথাও না কোথাও ইসরায়েলের মানে ইসরায়েলের প্রতি ভালোবাসা আমেরিকার জনগণের প্রতি উঠে এলেন, ঠিক আছে। আজ হোক কাল হোক এই ইসরায়েলের প্রতি মানুষের প্রতি ঘৃণা আরও বাড়বে। আমেরিকার নাগরিকরা এটা আমেরিকার নাগরিকরা এটা সবাই মিলে আর কি করতেছে। আগে যেমন ইসরায়েলের প্রতি ভালোবাসা ছিল প্রায় 90%, আর এখন মাত্র ভালোবাসা আছে 47%, মানে 53% মানুষ ইসরায়েলের বিপক্ষে বর্তমানে দাঁড়াইছে। কারণ ওনারা যেভাবে অত্যাচার করতেছে, ওরা দেখা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে আমেরিকার যে গভর্নমেন্ট আছে তারা পোর্টালটা বিকে গেছে ইসরায়েলের কাছে, ইসরায়েলের টাকার কাছে। আর মানে যে কোনো একটা ইস্যু আছে, যাই হোক দেখি কী হয়। का पालतू होना था, लेकिन एंड रिजल्ट ये हुआ है कि अमेरिका इजराइल का पालतू बनकर रह गया है। सच है कि ईरान भी दूध से धुला नहीं है। हूतीज, हमास, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सीज को उसने भी सपोर्ट किया है, उन्हें ग्रो किया है, अपना दबदबा रीजन में बनाया है। ठीक जैसे अमेरिका ने भी इजराइल को एज अ पालतू पहले बनाया था, मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना बेस रखने के लिए इजराइल को सपोर्ट किया था। लेकिन अब वो घर में सिचुएशन कैसे बदल गई, पालतू मास्टर बन गया, ये अपने आप में एक मजेदार खेल है। ईरान आगे जाकर ये युद्ध हारेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका के लिए ये हारी बाजी ऑलरेडी बन रही है, क्योंकि सबसे पहले तो उसका चहीता इजराइल, उसकी अच्छे से पिटाई हो रही है। इजराइल ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से बैलिस्टिक्स उसके ऊपर आ जाएंगे और ईरान इतने जोर से अटैक करेगा। उसके ऊपर दूसरी हारी, अमेरिका जैसे विशाल देश को, ट्रम्प जैसे महान प्रेसिडेंट को एक अनंत युद्ध में इजराइल ढकेलने की कोशिश कर रहा है। सबको ये दिख रहा है, ये अमेरिका खुद नहीं चाहता है, ये इजराइल चाहता। এবার সরাসরি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে ইউরোপের শক্তিশালী 9 দেশ। তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছে। এই খবর জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এর আগে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী ইসরায়েলিদের ফিলিস্তিনি অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। ইরানের সশস্ত্র বাহিনী ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের সতর্ক করে বলেছে, ইসরায়েলিদের এসব বসতি অদূর ভবিষ্যতে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। ইরানের এই সতর্ক বার্তার পরপরই অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য প্রস্তাব তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপের ওই 9 দেশ। স্যান্ডেলিনা সো রূপচর্চায় কাজা কালাসকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। রয়টার্স জানিয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। ইসরায়েলি পণ্যের প্রায় 1/3 ইউরোপের বাজারেই যায়। গেল বছর ইউর সঙ্গে ইসরায়েলের পণ্য বাণিজ্য ছিল 42.6 বিলিয়ন। এই বাণিজ্যের কতটা বসতি স্থাপনের সাথে জড়িত? দেখি ক্লাস্টার বোমটা কতটুকু আপনার করতে পারেন। এইটার থেকে দেখতেছি, দেখি কি অবস্থা। ক্লাস্টার বম এক্সপ্লেন্ড, ক্লাস্টার বম কীভাবে কাজ করে তা এক্সপ্লেন করবে। লোডিং দিচ্ছে, একটু দেখা যাচ্ছে সব হচ্ছে।
এখানে হাইপারসনিক মিসাইলগুলো অনেক মারাত্মক। ওদের এত পরিমাণ ওরা মিসাইল বানায় রাখছে যেগুলা এখনও ওনারা তার কয় পার্সেন্ট 5% ওনারা ইউজ করছে, 95% ওরা রেখে দিচ্ছে। তাহলে ওরা ওদের এত পরিমাণ মিসাইল আছে যেগুলো দিয়ে পুরো মিডল ইস্টের সব এয়ারবেসগুলো আমেরিকার সবগুলো ধ্বংস করা সম্ভব। কুয়েত, জর্ডান, হ্যাঁ, লেবানন, সিরিয়া, বাগদাদ, ইরাকের বাগদাদ। আচ্ছা দেখেন, A cluster bomb is a type of weapon designed to release multiple smaller explosives, known as submunitions or bomblets, across a wide area. These bomblets are usually unguided and scatter over the target zone due to the momentum of the main container and the influence of wind. The cluster munition unfurls its ribbon, indirectly semi-arming the shaped charge. It is at this stage that it becomes a lethal weapon and the inertial weight takes action to detonate the grenade. The United States, Russia, and Iran are among the few countries known to use these weapons. We will also be examining the advantages and disadvantages regarding the devastating consequences of this weapon, all in the video ahead. Let's dive into its parts and functions. Starting from the back, this is the base burn assembly. মারাত্মক। Just above it is the propellant added to create extra thrust to reach an estimated range of 29.4 kilometers and 18.3 miles. This is the base of the artillery. It can stack 80 M42 or M46 grenades. That's a lot of firepower packed in this small little artillery. But how can you stack 88 clusters grenades in one artillery shell? If you turn the grenade upside down, it is actually hollow from the bottom. This was designed to fit the shaped charge. That was also one of the reasons they were able to stack 88 grenades one after the other, just here in the animations. Just above it is the pusher plate, which is connected to this expulsion charge cup required to eject the grenade. আচ্ছা, এটার মধ্যে Finally, at the অনেক top থাকে, is ঠিক the আছে? fuse often used to arm the artillery shell for different variety of detonations. It has a length of around 937 millimeters from the tip to the base of the artillery shell. While it has a diameter of 155 millimeters, that is one of the standard rounds for NATO artillery calibers. It weighs 46.5 kilograms, which is pretty heavy considering its size and the 88 grenades stacked inside it. If there is any confusion, this is the size when compared to an average human. 46 কেজি ওজন আর অনেকগুলো গ্রেনেড রাখা যায় এটার মধ্যে, গ্রেনেড আলাদা হয়ে বের হয়ে যায়। This firepower needs a platform to deliver to its designated target. The answer is this 155 millimeter howitzer and the self-propelled Paladin gun. মারাত্মক অবস্থা। The Paladin is armed with a 155 millimeters howitzer fitted with a semi-automatic loading system. It has a maximum range of fire of around 24 kilometers with standard projectiles and 30 kilometers with rocket-assisted projectiles. The maximum rate of fire for this self-propelled gun is 4 rounds per minute. But in this video, we will be focusing on how it is fired from this 155 millimeters howitzer built in the 1970s, often referred to as the King of Battles. This artillery can be divided into 5 basic parts. Number 1, the barrel required to fire the 155 millimeter shells. Number 2, the recoil system, which is required to absorb the force when fired. Number 3, firing platform and the traverse handle. Number 4, this is the breech ring built with the highest quality steel and materials. Number 5, here comes the loading tray to load both the shell and the propellant. Number 6, just above it is the firing handle. Number 7, a lanyard to pull from a certain distance for safety purposes to make the propellant charge. Number 8, this is the trail system required to keep the gun stationary on the ground when fired. Now that we have understood its parts, let's fire this gun in these super simplified steps. Step number 1. Once the fuse is verified, the shell is loaded on this receiving tray. Step number 2. Here, the shell is manually pushed by a soldier inserted with this curved-looking object. Step number 3. A small propellant charge is inserted just after the verified round was loaded. Step number 4. The tray comes back up to make space for the breech ring to close. Step number 5. All said and done, the soldier pulls the lanyard, triggering the primer to fire the propellant charge required for this dual-purpose improved conventional munition. This will propel
The shells to a maximum range of fire around 24 kilometers with standard projectiles and 30 kilometers with rocket-assisted projectiles. Now that we've cleared that out, let's examine the basic step-by-step fired. The fuse assembly activates the explosive charge. The expulsion charge pushes this plate. The outer casing detonates, releasing the M42 grenades as shown in this animation. As soon as it's expelled, a nylon ribbon stabilizer kicks into action. This stabilizer extends and positions the grenade perfectly, getting it ready for its next moves. But that's not all. Due to some clever engineering, the rotational forces at play start unthreading the threaded firing pin from its weight, making the grenade semi-armed. And as the firing pin is pulled out of the slide assembly, things start getting even more interesting. Step number 5. This is where arming the grenade takes place. Now pay close attention. With the firing pin out of the way, the slide assembly becomes free to move. It's like a well-choreographed dance, all thanks to the slide spring and some centrifugal force. These two work together to smoothly move the slide assembly into the armed position. The slide spring ensures that the assembly stays in this fully armed state. Impact and detonation. Fast forward to the impact. This is where the chaos happens. When the grenade hits its target, a specially designed inertial weight takes action. This weight drives the firing pin right into a detonator known as the M55, setting off the firing train. Step number 7. As the firing train ignites, get ready for a spectacular display. A shake-charged jet is propelled downwards, while the body of the grenade bursts into a multitude of tiny fragments. Think of it as a controlled explosion that delivers some serious firepower. This jet is incredibly powerful, capable of penetrating around 2.75 inches of solid armor plate. That's some serious punch, destroying tanks and light armor vehicles. The fragmentation of the grenade body creates a devastating antipersonnel effect. Those tiny fragments we talked about earlier, well, they become lethal projectiles, causing havoc within their radius. It's a smart design that adds an extra layer of effectiveness to this powerful weapon. First up, let's talk about the potential advantages of M42 cluster bombs on the battlefield. These cluster bombs, or some called dual-purpose improved conventional munition, are strategically designed to cover a wide area with smaller sub-grenades. But folks, we cannot ignore the serious downsides to M42 cluster bombs. Let's break down the major concerns. Indiscriminate nature. This is a big one. Critics argue that M42 cluster bombs lack precision, releasing sub-munitions over a wide area, including populated regions. This indiscriminate nature poses a significant risk to civilians, including children. Those unexplored sub-munitions, they can remain hazardous for years, causing civilian casualties and hindering recovery efforts long after the conflict is over. Potential unintended consequences. Last but not least, the wide area of impact can spell trouble. M42 cluster bombs could lead to unintended consequences like harming friendly forces, damaging critical infrastructure, or even displacing civilians. This is how we make original 4K 3D animation from scratch in Blender open source software with 2 animators working on it full time. Do subscribe and light up the comment sections. দারুণ খবর, গ্রিন ডায়মন্ড থেকে মাত্র 990 টাকায় পাচ্ছেন 3টি অসাধারণ নোজ রিং, সাথে পাচ্ছেন একদম ফ্রি একটি গিফট রিং। হ্যাঁ, একদম ঠিকই শুনেছেন, এক দামে 3টি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার গর্জিয়াস ডিজাইন। পরার সাথে সাথেই আপনার লুক হবে একেবারে গ্ল্যামারাস। স্টক শেষ হওয়ার আগেই অর্ডার করুন এখন। Green Diamond. Nice packaging. Gift 5. Premium leather box. Attractive all packaging. পাঁচটা করে বাইক কিনবেন বুঝতে পারা নাই
দেন কুসাম তেরুন ভাই এদিকে এদিকে একটা করে স্টক এলো ভাই একটা উদার বিল থেকে কি করতে 20 টাকা 40 টাকা ভাই 8 টাকা পাই না মারছে Israel keeps relentlessly dismantling Iran's missile capabilities. Just this morning, it wiped out 35 launchers, along with several missile storage sites. Fighter jets destroyed 35 missile launchers. Storage sites in Iran this morning, IDF says. In fact, according to Israel, and this is extremely important, Iran has already lost more than half of its missile launch capacity, something that is clearly making the Black Turban regime increasingly nervous. The Ayatollah's position is becoming more fragile, which may explain why recent attacks against Israel have become far more indiscriminate. For example, just yesterday, Iran crossed a terrible line that Israel will no doubt make them pay for very soon. I'm talking about the ballistic missile that struck Soroka Hospital in Be'er Sheva, the largest hospital in the entire southern half of the Israeli state. Iran's terrorist tyrants launched missiles at Soroka Hospital in Beersheba and at a civilian population in the center of the country. We will exact the full price from the tyrants in Tehran. You see, Netanyahu is now promising an even bigger dose of revenge. In fact, he's already in the midst of it. In the last few hours, the home of another nuclear program scientist in Tehran has been attacked with drones. And Israel's defense minister has gone so far as to say that Khomeini can no longer exist because he is basically the modern Hitler. That's where things stand. With full control of Tehran's skies and the entire western half of the country, they can so far as to say that Khomeini can no longer exist because he is basically the modern Hitler. That's where things stand. With full control of Tehran's skies and the entire western half of the country, they can pretty much do whatever they want. They can take out more government buildings or hit Iran's economy even harder by destroying oil and gas facilities. There are plenty of options on the table because attacks like this one on the hospital only give Israel the green light for any kind of retaliation. In any case, the Israelis will keep doing what they're doing, taking out defenses, missile systems, and pretty much anything tied to Iran's military or intelligence apparatus. Like we said before, they won't stop until the job is done. Speaking of these attacks, just a couple of days ago, Israel destroyed the headquarters of Iran's public security police. Many people brushed off this strike as just another one of the 1,100 targets Israel claims to have hit since the start of the operation. But this one was different. It wasn't directly tied to any immediate threat against Israel. Blowing up that building might actually be more significant than it seems. In a way, it sends a direct message to Iranians. Israel isn't just targeting the Ayatollah's military threats, it's also going after the regime's social control structures. Why? Well, there are various theories, but many analysts believe that by attacking these kinds of targets, Israel is trying to encourage an uprising among the Iranian people. In other words, to break the population's fear of protesting and destabilize the Ayatollah's grip on power. In fact, just yesterday, something else happened that might suggest this strategy is already in motion. Take a look. Iran blames Israel for hacking state TV broadcast with calls for uprising. Pro-Israeli hackers managed to take control of the broadcasting of several Iranian television channels, while at the same time, images of women's protests and messages urging people to take to the streets began to appear on television. And this, on top of what we've just told you, can suggest something more. Israel might also be trying to create the right conditions to spark a reaction from the Iranian people themselves against the Ayatollah's theocratic regime. An uprising could be the only possible way to try to force a regime change, because evidently neither Israel, nor the United States, nor any other country will even consider deploying a single soldier on the ground apart from covert operations. Therefore, for the regime to fall, the Iranians need to mobilize. Along these lines, Reza Pahlavi himself, the son of the Shah overthrown by Ayatollah Khomeini in 1979, has said he's ready to lead a provisional government and that there's already a plan in place. Iran
دچار جنگ داخلی و بی‌ثباتی نخواهد شد. ما برای آینده ایران و شکوفایی‌اش برنامه داریم. ما برای 100 روز نخست پس از سقوط، دوران گذار و استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک. But there's one thing to keep in mind here, and that is that Pahlavi's words, the supposed crown prince, could scare off many Iranians rather than ignite a real social revolution. Why? Most Iranians aren't willing to risk their lives in the streets just to restore someone who's basically the heir of a short-lived and brutally repressive monarchy. It happens that his father, Mohammad Reza Pahlavi, was a dictator who built a ruthless, repressive machine and a massive corruption network that stole billions of dollars. In the end, that regime fueled the Iranian Revolution, which, while originally mostly secular, was hijacked by the religious minority who installed the theocracy that we see today. And let's not forget that his grandfather was even an ally of the Nazis. So, no matter how often his name comes up, honestly, it doesn't seem like this man represents what most Iranians want for their future. Now, apart from this so-called crown prince, is a regime change in Iran actually possible? How could such a change happen? And what would it mean if the United States joins Israel's offensive? Well, that's exactly what we're going to break down in this video, so pay close attention. Israel leveling the ground? Targets when it launched its first massive attack on the 13th of June was precisely Iran's top leadership. In other words, the regime's military leadership. As soon as the offensive began, Chief of Staff Bagheri, Commander-in-Chief of the Revolutionary Guards Hossein Salami, and Revolutionary Guards Intelligence Chief. Same fate that Israel had already prepared for Hezbollah leaders in Lebanon last year. That is to say, a one-way trip to the afterlife. And that's not all. Israel has also sent a message loud and clear. Anyone who fills these new positions will suffer the same fate. This is what has in fact happened with Ali Shadmani, who took over as Chief of Staff and was killed after just 4 days. Israel kills Iran's new war chief days after taking out predecessor as strikes continue. The operation to take down the ringleaders is clearly aimed at 3 aspects. First, repress Iran's military capabilities. You know, if you mess with Israel, sooner or later, you'll pay for it. Because in the end, they've all been complicit in the attacks Israel has suffered in recent years, from Hezbollah's ongoing aggressions to the insane October 7th attack carried out by Hamas. And finally, many analysts believe this targeted and surgical elimination campaign might actually be part of a broader strategy to destabilize the power structure from within. This could, in a way, call into question the regime itself. This becomes even more relevant considering that Israel seems to have allies or collaborators embedded within the regime's own ranks. So, taking out the hostile top brass could be an effective way to ignite fierce internal power struggles. At the same time, it sends a clear message to the Iranian people. Don't fear these tyrants. Their days are numbered. In fact, it looks like this time, Israel is playing a different game, reaching out directly to the Iranian people, encouraging them to break free from their chains and spark a popular uprising that could ultimately bring down a regime already badly battered by this confrontation. And keep a close eye on this, because if there's one thing Netanyahu has proven over the years, it's that he knows how to play 5-dimensional chess. And keep in mind that Iranian civil society isn't exactly fond of the regime. During the massive protests of 2022 and 2023, sparked by women's rights, economy, the regime's repressive apparatus went after the demonstrators as things escalated quickly. They didn't just use tear gas, water cannons, and heavy-handed beatings to disperse protesters. They also fired live ammunition at anyone brave enough to stand up to them. There are even suspicions that the regime used chemical weapons in schools, where students, most of them young women, were protesting against this oppressive regime. That's why, beyond simply targeting internal security forces as punishment, much of what Israel is doing could actually be seen as a message of support to the Iranian people. But of course, as you can imagine, Iran's repressive network extends far beyond the security head.